speed versus velocity. Yes, now we will do the differences between speed and velocity, and here I have written some points on the board, and one by one we will discuss these points. So first point is based on the parameter definition, means पहला point हम ले सकते हैं दोनों की definition में क्या फ़र्क होता है. So definition of speed goes like this, that the speed of a moving body is the distance traveled per unit time. means एक particular time में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक मूविंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट विल बी known as its speed and velocity. And first point of velocity is the distance traveled by a moving body per unit time in definite direction. So what is the difference here? Means the distance traveled by a body in per unit time in definite direction, में एक particular direction यहाँ पर हमने mention किया है. सेकेंड पॉइंट इज स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मीन्स यहाँ पर जब हम स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर किसी मूविंग बॉडी की स्पीड है, तो हमें यहाँ पर उसकी डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना डायरेक्शन के भी हम स्पीड को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट ऑफ वेलोसिटी इज़ दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. Vector quantity means when we are expressing velocity, we have to mention the direction also. Speed में तो हमने कह दिया 60 किलोमीटर पर आवर, that is enough for expressing speed, but that is not enough for velocity. Now here, to express velocity, we have to mention the direction also. We will say that 60 kilometer per hour in north direction or 60 kilometer per hour in south direction. और स्पीड भी चेंज हो सकती है या डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, बट ये चीज़ हमें याद रखनी है कि वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते टाइम वी हैव टू मेंशन द डायरेक्शन ऑल्सो. ना थर्ड पॉइंट दैट इज बेस्ड ऑन दैट स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो बट वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो. यानी कि स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, बट वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है. ये पॉइंट अभी हम और क्लियर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. यहाँ पैरामीटर हो गया फॉर्मूला. सो हियर वी हैव टेकन द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, एंड फॉर्मूला दैट इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट हमको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो वी कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट. सो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन time taken. Now we will discuss the third point of speed versus velocity, that speed can be zero but velocity cannot be zero. And one thing more will be clear with this example, that speed and velocity are not always same. कुछ टाइम पे कुछ केसेस में सेम हो सकती हैं when the movement is in a straight line, but not all the time speed and velocity are same. So suppose a person is moving from his home to a shop which is at 100 meter distance and is covering this distance in 10 seconds. So speed, as we know the formula, that is distance traveled upon time taken. So we will find the speed here, that is 100 upon 10, and it will give us 10 meter per second. 10 meter per second speed हम इसमें find out कर सकते हैं. Now here when we talk about velocity, here velocity as according to its formula, that is displacement upon time taken. So again यहाँ पर हम देखेंगे कि home, that is the initial point, and from where the motion has started, and shop is the final point जहाँ पर motion खत्म हुआ है. So here displacement will be the difference between final and initial point, and it is again 100, and time taken, that is 10. So velocity here is also 10 meter per second, but in north direction, towards north. We can say that velocity is 10 meter per second towards north or due to north. That is first case. Now when the person is returning back from shop to home, at that time he has covered 100 meter more, यानी कि अब उसने total distance cover कर लिया 200 meter.
और टोटल टाइम टेकन दैट इज 20 सेकेंड. 10 सेकेंड्स जाते में और 10 सेकेंड वापस आते समय. सो एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी 200 अपॉन 20, दैट विल गिव अस 10 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड यहाँ फिर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी हियर, अब वो होम से इस पॉइंट से यानी कि इनिशियल पॉइंट होम था, अब वापस आने पे फाइनल पॉइंट भी होम हो गया. जब हम जाने और आने दोनों को काउंट करें यहाँ पर, तो स्पीड तब भी हम देखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड आई है, लेकिन अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है. होम ही इनिशियल पॉइंट था और होम ही फाइनल पॉइंट था. सो हियर दैट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा दैट इज 0 एंड टाइम टेकन विल बी सेम दैट इज 20. So it will give us 0 meter per second. So velocity here will be 0 meter per second. So from this example it is clear that speed and velocity are not always same. यहाँ तो same था, but in second case you have seen that speed and velocity are not same. And second thing, that velocity can be 0 but speed cannot be 0. I hope the third point of speed versus velocity is clear now.